राइट, बहुत बहुत नमस्कार, प्रणाम, आशीर्वाद, प्यार। हम लोग इंग्लिश के बहुत अच्छे क्वेश्चंस कर रहे हैं। प्रैक्टिस तगड़ी होनी चाहिए, कठिन क्वेश्चन होना चाहिए, है ना। आइए, आई बॉट a 5-liter milk bottle. I bought a 5-liter milk bottle day before yesterday. Dozens of cars were part of a pileup on NH10 early this morning. How many kilos of sugar does it require? ₹3,000 is not a high price for this. He asked me for 2 liters milk and a half kilos sugar. I bought, मैंने खरीदा a 5-liter milk bottle, 5 लीटर का एक मिल्क बॉटल खरीदा। ये बिल्कुल सही लिखा है, जब हाइफन से जुड़ा होता है ना तो नंबर के बाद जो नाउन आता है सिंगुलर काउंटेबल नाउन होता है। तो I bought a 5-liter milk bottle the day before yesterday, यहाँ होना चाहिए था the day before yesterday, परसों, कल के एक दिन पहले यानी परसों। Dozens of cars were part of a pileup, दर्जनों कार वर पार्ट ऑफ अ पाइलअप, हिस्सा थे ऑफ अ पाइलअप। पाइलअप होता है जब तेज रफ्तार से गाड़ियां चलती हैं और एक के ऊपर ठक 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 टकराती चली जाती है, उसको पाइलअप बोलते हैं। तो डजन्स ऑफ कार्स वर पार्ट ऑफ अ पाइलअप, दर्जनों कारें शामिल थी, हिस्सा थी एक पाइलअप का। ऑन NH10 पे अर्ली दिस मॉर्निंग, आज सुबह तड़के, नो एरर। हाउ मेनी किलोज ऑफ शुगर डज इट रिक्वायर, कितनी किलोग्राम शुगर। आपको मालूम है अनकाउंटेबल नाउन जब भी लिखते हो उसमें ऑफ होना चाहिए। तो हाउ मेनी किलोग्राम्स या किलोज ऑफ शुगर डज इट रिक्वायर, इसको जरूरत है, सही है। ₹3,000 इज नॉट अ हाई प्राइस फॉर दिस। ₹3,000 अगर नंबर आ गया तो 100,000 डजन स्कोर मिलियन बिलियन ट्रिलियन करोड़ लाख, नंबर के बाद प्लूरल नहीं लिखते, थाउजेंड्स या हंड्रेड्स या डजन्स या मिलियंस नहीं लिखते, मिलियन डजन स्कोर बिलियन
1,100 लिखते हैं. So 3,000 रुपीज. और ये पूरा एक सम ऑफ मनी है, पैसे की एक रकम है. तो अक्सर सम ऑफ मनी, पैसे की एक रकम देखने में प्लूरल लगता है, बट टेकिंग इट टुगेदर एज वन एंटिटी, अगर सबको एक एंटिटी के तौर पे लेते हैं तो इट्स अ सिंगुलर थिंग. तो 3,000 रुपीज इज नॉट अ हाई प्राइस. ये कोई बहुत ऊंची कीमत नहीं है फॉर दिस इसके लिए. सही है. यास्क मी, उसने मुझसे मांगा. यास्क मी फॉर, आस्क फॉर मतलब मांगना होता है. यास्क मी फॉर, उसने मुझसे मांगा 2 लीटर्स मिल्क. अभी क्या बताया था कि अनकाउंटेबल नाउन बिना ऑफ के नहीं आता है, तो 2 लीटर्स मिल्क नहीं होना चाहिए था, 2 लीटर्स ऑफ मिल्क. He asked me for 2 liters of milk and a half kilogram of sugar. A half kilo of sugar. Sugar भी अनकाउंटेबल नाउन है ना, अनकाउंटेबल नाउन बिना ऑफ के नहीं आता है. A half kilo या half a kilo दोनों सही है. और हाफ किलो मतलब ही आधा किलो, हाफ अ किलो मतलब ही आधा किलो. ठीक है. Five ninths of this money has come from the donations made by individuals. The one rupee note bears the signature of the finance secretary. Five 500 notes were binded inside the envelope. He wants to purchase a three-quarter coat for himself. The party enjoys itself a two-third majority in the lower house.
5 9s याद रखना आप कि जो फ्रैक्शंस होते हैं, 9s मतलब 9वां हिस्सा, तो वो हाइफन लगा के भी प्लुरल में आते हैं. 5 9s ऑफ दिस मनी, सही है. इस पैसे का 5 9s, 9 में से 9 हिस्से में बांटा जाए तो 5 हिस्से उसमें से हैज कम, अंततः तो मनी हुआ ना. तो इस पैसे का 5/9 हिस्सा हैज कम आया है फ्रॉम द डोनेशंस, उन डोनेशन से मेड बाय इंडिविजुअल्स, जो लोगों ने किए हैं. द 1 रुपी नोट, जो 1 रुपए वाला नोट है, बियर्स, वो रखता है, उस पे है द सिग्नेचर ऑफ द फाइनेंस सेक्रेटरी, फाइनेंस सेक्रेटरी का सिग्नेचर. 500 नोट्स, 500 वाले नोट्स वर फाइंडेड, वर फाउंड, पाए गए, इनसाइड द एनवेलप, इनसाइड द एनवेलप. एनवेलप जब नाउन होता है तो इसकी स्पेलिंग होती है एनवेलप, पीई, लिफाफे के अंदर ई होना चाहिए. He wants to purchase a 3/4 coat. ये एक एक्सेप्शन है. फ्रैक्शंस जितने होते हैं, 3rd 4th 5th 9th, 9वां हिस्सा, 5वां हिस्सा, तिहाई हिस्सा, वो हमेशा नंबर के बाद अगर 3 है तो प्लुरल होना होता है, हाइफन रहता है तब भी. लेकिन यही एक कोट ऐसा होता है, एक स्पेशल कोट का नाम है 3/4 कोट. उसमें क्वार्टर्स नहीं होता है, क्वार्टर होता है. तो दिस इज वन एक्सेप्शन. तो ही वॉन्ट्स टू परचेज, वो खरीदना चाहता है 3/4 कोट फॉर हिमसेल्फ, अपने लिए एक 3/4 कोट खरीदना चाहता है. द पार्टी एंजॉयज इट सेल्फ और 2/3 मेजोरिटी इन द लोअर हाउस. पार्टी को प्राप्त है, एंजॉय करता है. ऑब्जेक्ट ऑलरेडी ये आया है, 2/3 होना चाहिए था. ये समझाया हमने आपको कि फ्रैक्शन हमेशा प्लुरल में लिखेंगे. पार्टी को प्राप्त है, वो एंजॉय कर रही है 2/3 मेजोरिटी, उसको 2/3 बहुमत है इन द लोअर हाउस, निचले सदन में, यानी लोकसभा में. I never imagined I'll make to this stage in my life. The Brahmins were not supposed to be touched by the Shudras. He always used to come very late in the meetings. This movie, it's supposed this movie is supposed to have the potential to be a super hit.
The people with ulterior motives will automatically get caught. He was caught red-handed. And had no escape. I never imagined, मैंने कभी इमेजिन नहीं किया. I would make, देखिए ये past tense है ना. I would make to this stage, कि मैं पहुंच पाऊंगा इस स्टेज तक in my life अपने जीवन में. The Brahmins were not supposed to be touched by the Shudras. जो Brahmins थे were not supposed to be touched. माना जाता था कि उन्हें छुआ नहीं जाना चाहिए by the Shudras, Shudras द्वारा. He always used to come very late in the meeting. He always used to come. Always का इस्तेमाल ठीक है यहाँ. Used to के साथ मिड पोजीशन यही होता है. He always used to come very late. वो बहुत देरी से आया करते थे. In the meetings नहीं, to the meetings. या for the meetings. In the नहीं. He always used to come very late for the meetings, या to the meetings. This movie is supposed, इस मूवी को माना जा रहा है तो इसमें तो कोई वो नहीं है, एरर नहीं था इसमें. दिस मूवी इज सपोज्ड, इस मूवी को माना जाता है पॉपुलरली या जनता द्वारा माना जा रहा है टू हैव द पोटेंशियल, इसमें क्षमता है टू बी बनने का सुपरहिट बनने का. इसमें भी कोई एरर नहीं है. द पीपल विद अल्टीरियर मोटिव्स, लोग जिनका उद्देश्य थोड़ा गंदा है, निहित स्वार्थ है, विल ऑटोमेटिकली गेट कॉट, वो ऑटोमेटिकली पकड़े जाएंगे. He was caught red-handed, उसको पकड़ा गया red-handed मतलब while he was committing the crime, जब वो अपराध कर रहा था तभी पकड़ लिया गया. And had no escape, और उसको बचने का कोई रास्ता नहीं था. ये भी करेक्ट है. Call me when you have finished doing this. Two more members are required to finish the quorum. The quorum.
He said it would take another 6 days to complete the work. Part of the problem is lack of punctuality. It is said, right, that nothing succeeds like success. Call me, मुझे कॉल करना when you have finished to do that. फिनिश के बाद वर्ब का एनजी फॉर्म आता है when you have finished doing this that. जब वो काम करना खत्म हो जाएगा तो मुझे कॉल करना. आपको मालूम है कि सबऑर्डिनेट क्लॉज प्रेजेंट टेंस में, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में लिखते हैं, फिर भी फ्यूचर सेंस आता है. कब? अगर सबऑर्डिनेट क्लॉज कब आए? किसी विल, शैल, कैन में या इंपेरेटिव सेंटेंस के बाद. ऐसे जिसमें मेन क्लॉज में इंपेरेटिव क्लॉज हो या मेन क्लॉज में वर्ब विल, शैल, कैन में प्लस इन्फिनेटिव हो, ऐसे सेंटेंस के अंदर अगर सबऑर्डिनेट क्लॉज आएगा तो फ्यूचर सेंस देने के लिए उस सबऑर्डिनेट क्लॉज में प्रेजेंट टेंस यूज किया जाता है. ये नहीं कि कॉल मी व्हेन यू विल हैव फिनिश्ड नहीं होगा, व्हेन यू हैव फिनिश्ड, है ना. अब ऐसे सबऑर्डिनेट क्लॉजेस शुरू होते हैं WH क्लॉज से, इफ से, अनलेस से, अंटिल से, है ना. वंस एक बार जब, ये पहले बता चुके हैं, चर्चा कर चुके हैं पहले ही क्लास में, है ना. तो एक तो ये चीज समझना है. दूसरा फिनिश्ड का जो फिनिश्ड वर्ब है उसके बाद इन्फिनेटिव नहीं आईएनजी फॉर्म आता है. सो फिनिश इज ऑलवेज फॉलोड बाय जेरेंडियल नाउन. 2 more members are required. 2 और मेंबर्स की जरूरत है टू फिनिश द कोरम, टू कंप्लीट द कोरम. कंप्लीट का मतलब होता है पूरा करना, फिनिश का मतलब होता है खत्म करना, है ना. He said it would take another 6 days. उसने कहा it would take, इसमें लगेगा और 6 दिन, और 6 दिन लगेंगे, 6 days to complete the work, कंप्लीट करने में काम को. Part of the problem is, एक समस्या तो ये भी है his lack of punctuality की, उसमें पंक्चुअलिटी का अभाव है, समयबद्ध तरीके से काम नहीं करता है. It is said, right, ये सही कहा जाता है that nothing succeeds like success. ये एक इडियम होता है कि nothing succeeds like success का मतलब होता है चलती का नाम गाड़ी. मतलब जो आदमी सक्सेसफुल है उसकी हर चीज सफल हो जाती है, और कोई आदमी सफल नहीं हो, कितना भी अच्छा करेगा तो उसको उतना रिकग्निशन नहीं मिलता है. ये राइट जो है ना, इसको यहां बोलना है. इट इज राइटली सेड, ये उचित तौर पे ही कहा जाता है. राइट जब एडवर्ब का काम करता है ना, वो कब करता है? आई गेस्ड इट राइट, है ना. इट वॉज, माई नेम वॉज स्पेल्ड राइट, मेरा नाम सही सही वर्तनी लिखा गया था. आई गेस्ड इट राइट, मैंने सही सही गेस किया. वहां इन वर्ब्स के साथ राइट एडवर्ब के तौर पे इस्तेमाल होता है, और अर्थ होता है सही सही. लेकिन जब अर्थ हो कि न्यायोचित या उचित तरीके से, ये उचित ही है, तो इट इज राइटली सेड का मतलब ये उचित ही है, न्यायोचित तरीके से ही कहा जाता है दैट नथिंग सक्सीड्स लाइक सक्सेस. ये चलती का नाम ही गाड़ी होता है, सफलता जैसी सफल होने वाली कोई चीज नहीं है.
By the time the secretary had arrived, I had completed the formalities. I had filled out the form. The event is being organized under the aegis of Setu, an NGO. The logo's design was very fit and conveyed a lot about the institution. During the trip, I got to learn a lot about myself and the world. And the world at large.
after the jailbreak, after 3 days, after 3 days of the jailbreak, after 3 days of the jailbreak, the escaped prisoners are still at large. By the time the secretary had arrived, जब तक secretary पहुंचा, past indefinite tense, जब तक सचिव महोदय पहुंचे, जब तक सचिव महोदय पहुंचे, I had completed, filled out the form. I had completed filling out the form. या I had filled out the form. completed नहीं होगा. I had filled out the form. मैंने फॉर्म भर रखा था तब तक, जब तक वो पहुंचे. The event is being organized. ये जो इवेंट है ऑर्गेनाइज किया जा रहा है अंडर द एजिस ऑफ सेतु. सेतु के तत्वाधान में. और सेतु क्या है? एन एनजीओ. एनजीओ जब पढ़ रहे हो तो वॉवल साउंड से शुरू होना. एनजीओ ए से शुरू हो रहा है, तो वॉवल साउंड से शुरू होने वाले वर्ड के पहले जब भी पढ़ना हो एन लगाते हैं. द लोगोज डिजाइन वॉज वेरी फिट. द डिजाइन ऑफ द लोगो, द डिजाइन ऑफ द लोगो. ऐसा है कि जो एपोस्ट्रोफी एस है, एपोस्ट्रोफी और एस थिंग्स के साथ नहीं लगता. ये मैन का कोई नाम हो, एनिमल का कोई नाम हो, कोई टाइम एक्सप्रेशन हो, उसके साथ एपोस्ट्रोफी एस लगता है, थिंग्स के साथ नहीं. द डिजाइन ऑफ द लोगो वाज वेरी सूटेबल. फिट नहीं, सूटेबल. डिजाइन जो था लोगों का बहुत सूटेबल था. एंड कन्वेड अ लॉट, और बहुत कुछ कन्वे कर रहा था, पहुंचा रहा था, सूचना दे रहा था अबाउट द इंस्टीट्यूशन, इंस्टीट्यूशन के बारे में. फिट आदमी होता है, स्वस्थ. लोगों का डिजाइन सूटेबल होगा, उचित, समुचित, सटीक. ड्यूरिंग द ट्रिप, ट्रिप के दौरान आई गॉट टू लर्न, मुझे सीखने को मिला, अ लॉट, बहुत कुछ, अबाउट माई सेल्फ, अपने बारे में, एंड द वर्ल्ड एट लार्ज, और जो व्यापक दुनिया है. द वर्ल्ड, दुनिया, एट लार्ज मतलब व्यापक, बाहर की. आफ्टर 3 days ऑफ द जेल ब्रेक, उस जेल ब्रेक के 3 दिन बाद, द एस्केप्ड प्रिजनर्स, जो भागे हुए कैदी, आर स्टिल एट लार्ज, वो अभी भी एट लार्ज हैं. एट लार्ज का मतलब पकड़ से बाहर, भगोड़े. तो एट लार्ज का ये भी एक अर्थ होता है कि पकड़ से बाहर, है ना, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है. आफ्टर 3 days ऑफ द जेल ब्रेक, द एस्केप्ड प्रिजनर्स आर स्टिल एट लार्ज. He has even been to the Antarctica once. I took some extra money lest the price have increased.
he was he was charged for double murder. After her death, Rose melts sweetly. So people use it in homes for fragrance. The wrestler looked terrific. In that black dress with a grotesque mask. Long before I'm gone, they will have realized it. He has even been to Antarctica once. Antarctica कॉन्टिनेंट के नाम है. यहाँ तक कि वह गए हैं अंटार्कटिका भी एक बार. गो वेंट गॉन भी होता है, गो वेंट बीन भी होता है. तो ये इवन इवन मतलब यहाँ तक कि ये बीन वो गए हैं टू अंटार्कटिका वंस एक बार. आई टुक सम एक्स्ट्रा मनी, मैंने कुछ एक्स्ट्रा पैसा ले लिया. लेस द प्राइस हैव इंक्रीज्ड, कि कहीं कीमत न बढ़ गया हो. लेस्ट के बाद शुड प्लस इन्फिनेटिव आता है या बेयर इन्फिनेटिव आता है. तो ये बेयर इन्फिनेटिव है, परफेक्ट इन्फिनेटिव, इसमें कोई दिक्कत नहीं है. लेस द प्राइस हैव इंक्रीज्ड या शुड हैव इंक्रीज्ड भी हो सकता था. लेस द प्राइस शुड हैव इंक्रीज्ड. तो ये भी सही है, ये भी सही है. He was charged for डबल मर्डर आफ्टर हर डेथ. उस पर आरोप तय किए गए पुलिस द्वारा. चार्ज्ड विथ होता है, चार्ज विथ सम क्राइम. तो वो चार्ज विथ डबल मर्डर.
तो ये डबल मर्डर जो है एक स्टैंडर्ड इंग्लिश है, तो ही वाज चार्ज विद डबल मर्डर आफ्टर डेथ, उसकी मृत्यु के बाद उस पर आरोप लगा डबल मर्डर का, 2 लोगों की हत्या का। रोज स्मेल्स, अब देखिए ये लिंकिंग वर्ब है, जो गुलाब होता है वो स्मेल करता है मधुर, अच्छा, स्वीट। यहाँ पे आपको लिंकिंग वर्ब के बाद एडजेक्टिव चाहिए कॉम्प्लीमेंट के रूप में। सो पीपल यूज इट, लोग इसलिए इसका इस्तेमाल करते हैं। इन होम्स, घरों में, फॉर फ्रैग्रेंस, सुगंध के लिए, खुशबू के लिए। द रेसलर लुक्ड टेरिफिक, रेसलर लग रहा था बहुत अच्छा। इन दैट ब्लैक ड्रेस, उस काले रंग के ड्रेस में, विद ग्रोटेस्क मास्क, जिसका मास्क बहुत विभत्स था, भयावह था। यहाँ इसका मतलब जबरदस्त नहीं लग रहा था, भयावह लग रहा था, टेरिफाइंग। टेरिफाइंग लग रहा था इन दैट ब्लैक ड्रेस। टेरिफिक का मतलब होता है बहुत अच्छा, टेरिबल का मतलब होता है बहुत बुरा। टेरिफिक बहुत अच्छा, टेरिबल बहुत बुरा, टेरिफाइंग भयानक, डरावना। लॉन्ग बिफोर आई एम गॉन, मैं चला जाऊंगा उसके बहुत पहले, मेरे जाने के बहुत पहले। दे विल हैव रियलाइज्ड, उनको रियलाइज हो चुका होगा ये बात। दिस सही है, इसमें कोई एरर नहीं है ना। He was talking very he was talking loud over the phone with someone. On which day will this program be broadcasted on the TV? Mumbai is much costlier than any city in the world. Goods carriages goods carriages are being allowed to pass, but not the vehicles carrying passengers. When one goes
to that height, he is likely to pass out owing to the lack of oxygen. He was talking loud नहीं, he was talking loudly. वो जोर जोर से बात कर रहे थे. He was talking aloud. वो जोर जोर से बात कर रहे थे. Over the phone. Over the phone, on the phone दोनों होता है. On the phone या over the phone with someone. अब देखिए इसमें ना पहले मैनर फिर प्लेस, तो इसके पहले ये होना चाहिए था. He was talking loudly aloud with someone. किसी से जोर जोर से बात कर रहे थे over the phone. On which day will this program be broadcasted on TV? किस दिन will this program be broadcasted नहीं होता है, broadcast, broadcast, broadcast. All the three forms are the same. So on which day will this program be broadcast? और on TV होता है. देखो on the phone, on the radio होता है, लेकिन on the TV नहीं, on TV होता है ना. तो किस दिन ये टीवी पर प्रोग्राम ब्रॉडकास्ट किया जाएगा? मुंबई इज मच कॉस्टलियर. मुंबई जो है बहुत ज्यादा कॉस्टलियर है देन एनी सिटी इन द वर्ल्ड. दुनिया के किसी भी शहर से. अगर दुनिया के किसी भी शहर में कह रहे तो क्या मुंबई दुनिया से बाहर है? एनी सिटी इन द वर्ल्ड, दुनिया के किसी भी शहर से, तो दुनिया किसी भी शहर में तो मुंबई भी शामिल है. यानी मुंबई से भी ज्यादा कॉस्टलियर थोड़ी है मुंबई. यहाँ लिखना पड़ेगा एनी अदर सिटी, एनी अदर सिटी, कि मुंबई इज मच कॉस्टलियर देन एनी अदर सिटी इन द वर्ल्ड. दुनिया के किसी भी दूसरे शहर से ज्यादा महंगा है. गुड्स कैरेजेस, माल ढोने वाली जो गाड़ियां हैं, आर बीइंग अलाउड, उन्हें अलाउ किया जा रहा है टू पास, गुजरने के लिए, बट नॉट द व्हीकल्स, लेकिन वो व्हीकल्स नहीं कैरिंग पैसेंजर्स, पैसेंजर्स को, यात्रियों को कैरी कर रहे हैं. व्हेन वन गोज टू दैट हाइट, जब कोई व्यक्ति जाता है उस हाइट पे, तो ही इज लाइकली टू पास आउट, तो संभावित है कि वो बेहोश हो जाएगा. तो ही नहीं होगा, वन सब्जेक्ट लिया है ना वहां, तो वही पास आउट होगा ना जो गया है. तो व्हेन वन गोज, जब कोई व्यक्ति जाता है टू दैट हाइट, उस हाइट पे, वन इज लाइकली टू पास आउट, तो संभावित है कि वो पास आउट हो जाएगा, मतलब वो बेहोश हो जाएगा. ओइंग टू द लैक ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन की कमी के कारण. सो दैट्स इट फॉर टुडे. आज के लिए इतना ही. कोई क्वेश्चन हो तो भेजा करो, है ना. किस नंबर पे भेजोगे? 6306211761. कोई भी आपकी सवाल है, क्वेश्चन है, कुछ भी है तो आप इस पे भेजा करिए. व्हाट्सएप नंबर है, ठीक है ना. सो दैट्स इट फॉर टुडे. आज के लिए इतना ही. आई विल सी यू टुमारो. टिल देन टेक केयर ऑफ योरसेल्फ. बाय बाय.